Hello viewers, you're watching Hornbill TV. Ganesh Chaturthi was celebrated with devotion and grandeur across India, including Assam and the Northeast on Wednesday. The festival, marking the birth anniversary of Lord Ganesha, saw thousands of devotees gathering at temples and community pandals in Guwahati. Offerings of flowers, sweets and prayers filled the air, accompanied by devotional songs, cultural programs and community feasts. Some puja committees began celebrations on Tuesday with evenings of bhajans and cultural performances. The Ganesh Gauri Puja committee, celebrating its golden jubilee this year, recalled its 50-year journey of devotion. Organizers shared how even the chief guest chose to remain unnamed before Lord Ganesha, reflecting the humility and spirit of the festival. The festivities will continue for several days, ending with the grand Ganesh Visarjan, when idols of Lord Ganesha are immersed in water with music and dance-filled processions. हमारी ये जो समिति है 50 वर्ष पहले स्थापित हुई थी 1975 में, और ये आज भगवान गणेश जी की कृपा है कि हमारे यहाँ पर ये कार्यक्रम, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इसमें सारे हिंदी भाषी मारवाड़ी समाज के लोग होने के बावजूद असमिया संस्कृति से ओतप्रोत हम कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर कल धुलिया भावना का कार्यक्रम बहुत शानदार यहाँ पर रहा, और आज हमारे यहाँ पर बाहर से जो नाम नगाड़ा पार्टी है सुभाष नाथ, उनका कार्यक्रम होगा, और दिन भर आप देख रहे हैं भगवान गणेश जी के लिए सभी आप है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर हमने जो चीफ गेस्ट और जो मुख्य अतिथि को बुलाया है, उन्होंने भी अपना नाम देने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे गणेश जी के सामने अगर आप हमारा नाम देंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनका नाम हम बताएं, और ये कार्यक्रम से हमें इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आज 50 साल पूरा किया हम लोगों ने। The United Senior Citizen Forum of Pungyar in Manipur's Kamjor district has raised serious concerns over the widening and improvement project of the Changshak Thengnopal Road under NH 121A. The forum, along with village chiefs, councils and residents of the affected areas, alleged that the tender of the project has been awarded below standard rates, which they fear would lead to poor quality work and ultimately harm the most vulnerable communities. In a letter to the Union Minister of Road and Transport and Highways, they have resolved not to allow the execution of the project under the present terms and warned they may withhold land access if their concerns are ignored. The forum is demanding that the project be re-tendered to ensure integrity, quality and long-term benefits for the local residents. Right. My name is David Zivik. I'm Secretary of United Citizen Forum 43 Pungyar Kendra. We consist of 25 plus villages. Today's brief press brief is about widening of improvement of Changshak Thengnopal Road, especially the package street that consists from around about 78 kilometers. First of all, I would like to thank Honorable Union Minister Mot Nitin Gadkari, followed by Honorable Governor of Manipur, Chief Secretary of Manipur, Principal Secretary Works, and Chief Engineer PWD Manipur Department. We were very happy when when it was announced that for the amount of 429 crore, or the project of widening and improvement of road will be done. But to our very surprise, when the financial opening bid was done, it was very surprising when 12 bidder came, and the worst news was when only the first L1 candidate, Neeraj Cement Structural Limited, they bid for 227 crore. Let me quote again, work which was supposed to be done for 429 crore, 227 crores was bidded, which was the lowest, and it's a very surprising and it's a mockery thing. We are sad and we are not happy at all. We were very happy at first time when we the 25 villages, we were very willingly expecting to even sacrifice our land and place and emotions. But seeing the result, we are unhappy, and we have come to our resolution that we will not welcome such actions and such deeds. We will not support, we will not cooperate, we will not entertain in whatsoever means.
we will not cooperate, such as that we are willing not to accept any kind of money, bribery or anything. It is this is the first time in Manipur such incident has happened, and then it's a very shameful thing. I request Manipur Hills and Plain contractor should also intervene and look into this matter. I also request to the Honorable Union Minister Mort Nitin Gadkari, Honorable Governor Manipur, Chief Secretary Manipur, Principal Secretary Works, Chief Engineer PWD Manipur to look into this matter seriously and to retender it again, and it should be under the schedule red. It should be not under minus, it should be in the schedule red. If not so, we will seriously not accept any kind of notice or whatsoever, and we will not rest until it's done. Security forces in Manipur have made significant arrests and recoveries in a series of operations on Tuesday. In Imphal East District, an active cadre of the prescribed pre-packed outfit was arrested from Namedpali under Lamlai police station. The arrested militant has been identified as Nongmaitem Naucha Meitei, age 26, of Yangang Pokpi Makha, Lekei. In a separate operation in Jiribam district, security forces recovered a large cache of arms, ammunition and military gear from Rashidpur area under Jiribam police station. The seized items include an SLR rifle, an Insas rifle, pistols, handheld radio sets, magazines, ammunition, and other warlike stores. Meanwhile, in Churachandpur district, a joint team of Manipur Police and Central Forces arrested a 59-year-old woman with psychotropic substances worth nearly 10 lakh rupees. The accused, identified as Manaihoy Baite of S. Munuam, was found in possession of 1,200 WY tablets. All arrested individuals and recovered items have been handed over to the respective police stations for further investigation. Tripura police recovered 4 factory-made pistols and 7 magazines during a late-night raid at Uttar Madhyapara under Amtali police station in West Tripura on Tuesday. The raid, led by Superintendent of Police Namit Phatak, followed intelligence inputs about hidden arms at the residence of Dibhankar Sen, an habitual offender facing multiple cases under the Arms Act. Although Sen is already in judicial custody in another arms case, police suspected more weapons were stored at his house. During the search, officers dug up a room in the residence and unearthed the firearms buried beneath the floor. The weapons were sent to the Forensic Science Laboratory for ballistic testing to determine their origin and possible use. Senior officials, including Additional SP Dhrubanath, SDPO Parmita Pandey, and OC Amtali PS Paritosh Das supervised the operation. इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें मिला था उस पे एक दीपांकर सेन करके एक व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, अभी जेसी में है। आमतली पीएस के ऑलरेडी एक जो केस नंबर 93 में अभी वो जेसी में है। एक इनपुट जो मिला था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि उनके घर पे कुछ आर्म्स स्टोर करके रखे हैं, तो उस पर एक्ट करते हुए आमतली थाना की पुलिस और एसडीपीओ मैडम उन्होंने वहाँ पर रेड करी, और रेड करने के बाद ये जब वहाँ पर घर के अंदर डिगिंग करी तो डिगिंग में हमको 4 स्मॉल आर्म्स और 7 मैगजीन्स बरामद हुए हैं। कोई भी बंदा अरेस्ट हुआ है? ये बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड है, जो दीपांकर सेन मैंने नाम बताया। इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं और मोस्टली आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, ऑल ओवर इन पे केसेस हैं। कहाँ पे छुपा कर रखा था? ये घर में जो बाड़ी में एक जगह कॉर्नर ऑफ द रूम में अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था। 4 एक साथ मिला और है कुछ पता चला कुछ? ये एक्चुअली अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, बट स्टिल कुछ और हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो बीच है। तो बुलेट मिला क्या? नहीं, कोई राउंड नहीं मिला। जो बरामद हुआ है वो 7 कार्ट्रिज 7 मैगजीन्स हैं और 4 स्मॉल आर्म्स हैं। जो पिस्तौल आपको मिला वो क्या इंडियन है या दूसरा? ये तो एक्चुअली जो है जो देखने में लगता है वो फैक्ट्री मेड है एंड एफएसएल में भेजा जाएगा, और बाकी जो एफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद हम बताते हैं।
सर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जिसके घर से ये पिस्तौल बरामद हुआ है वो पहले से ही इस बिजनेस में लगा हुआ है और उससे पहले भी कई बार पिस्तौल लेके वो गिरफ्तार हुआ था। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी ये व्यक्ति हैं, इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं ऑल अक्रॉस त्रिपुरा, जिसमें मधुपुर में भी केस है, नूती बाजार में बीस में भी इन पे केस है, धर्मनगर, सबू, GRP, ऑल अक्रॉस त्रिपुरा इन पे केसेस हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन जैसे आपको बताया कि उसमें हम फर्दर अनफोल्ड हो गए। सर जिसके घर में आपने काम किया जी, उसका नाम क्या था? उनका नाम दीपांकर सिंह, घर एड्रेस और दीपांकर सिंह, और बाड़ी इनकी मध्यपाड़ा में है, अंडर आमतली केस। जिस घर में ये छुपा के रखे थे उस घर पे कौन रहता था? उसके घर में अभी उनकी एल्डरली मदर है एंड एक छोटा बेटा है। उन लोगों से आपने पूछताछ उनसे पूछताछ करी है, प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है एंड कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद Based on reliable intelligence input, the Kachar police conducted a special operation against the illegal supply of narcotic substances in Boromamda village under Lakhipur police station on Tuesday evening. During the operation, a large quantity of narcotic substances was seized from a vehicle and one person identified as Bokhtar Hussain Laskar, a resident of Sunai, was arrested. According to Kachar's senior superintendent of police Numal Mahata, addressing the press on Wednesday afternoon, said the police team recovered 30 soap boxes containing approximately 416 grams of suspected heroin hidden in specially designed chambers within the vehicle. The estimated market value of the seized narcotics in the black market is around Rs 2.8 crore, and testing with a drug detection kit at the scene confirmed the presence of heroin. Preliminary investigations revealed that the seized narcotics were illegally brought from Aizawl, Mizoram, and the investigation is ongoing. ड्रग्स यानी नशीली पदार्थों के विरुद्ध हमारा जो अभियान है ये लगातार चल रहा है और हमने एक विशेष करके एक अभियान हमने चलाया था। बरममदा गांव है, ये गांव लखीपुर सब डिवीज़न में है, वहाँ पे एक हमारा विशेष अभियान चला था। ये अभियान के दौरान हमने एक गाड़ी टाटा AC गाड़ी और गाड़ी का नंबर है AS 011 BC 8769, ये गाड़ी को हम लोगों ने वहाँ पे रुकाया और गाड़ी में जो एक सवार था जिसका नाम है मोहम्मद बख्तार हुसैन लश्कर, इनका घर है डोंगरी पार पार्ट 1 पुलिस स्टेशन सुनाई। तो जब हमने उसको वहाँ पे तलाशी चलाई, तलाशी के दौरान एक स्पेशल चैम्बर में गाड़ी चैम्बर बनाया हुआ था और उस चैम्बर में 30 सोप केसेस साबुन का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में हीरोइन उसने ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो हम लोगों ने उसी जगह पे जहाँ प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसी जगह पे हम उनको टेस्ट करवाया, ड्रग डिटेक्टिंग किट के ज़रिए हमने टेस्ट करवाया और जब टेस्ट हुआ, टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद हमने पूरे जो सामग्री था 416 ग्राम्स पूरे सामान को हम लोगों ने वहाँ पे सीज किया और उस दौरान हमारा जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस था वो भी वहाँ पे मौजूद थे और हमने पूरे चीज़ जो सामान जो नार्कोटिक सब्सटेंस है उसको हम लोगों ने जब्त किया और गाड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था उसको भी हम लोगों ने जब्त किया। और अब ये जो सामग्री है, जो नशायुक्त जो सामग्री है, पूरे सामग्री का जो ब्लैक मार्केट में आज के टाइम में इसका जो वैल्यू होगा या उसका जो प्राइस होगा उस 2.8 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है शुरू कर दिया है, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इससे पता चलता है ये जो सामान है ये सामान हमारा नेबरिंग स्टेट से आया था और नेबरिंग स्टेट हमारा डिस्ट्रिक्ट को एक ट्रांजिट पॉइंट करके इस सामान को बाहर ले जाने के उन लोग का इरादा था। तो हम लोगों ने इसको पूरी तरह से हमारा जो टिप ऑफ मिला उसके ज़रिए हम इसको नाकाम किया और लगातार हमारा जो ये जो अभियान है चलते रहेगा। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम राज्य को बिल्कुल ड्रग्स मुक्त राज्य के रूप में उनको प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। उसके लिए हमारा ये एक मुहिम
लगातार चल रहा है और आने वाले दिनों में भी चलते रहेगा। The Sunai Road Sarvajanin Ganesh Puja Committee in Silchar is organizing this year's Ganesh Chaturthi festival with the theme Operation Sindur. For the fourth consecutive year, the committee is hosting the Ganesh Puja, which will be celebrated over 3 days with various programs. Additionally, a cultural event will be held in the Pandal premises. The puja is organized with a budget of rupees 10 lakh and the entire Pandal has been beautifully decorated with lights. Shyamal Banik, an advisor to the puja committee, stated that Operation Sindur refers to a significant operation conducted by the Indian Army in Pakistan-occupied Kashmir in response to attacks on innocent tourists. To honor the bravery, the Puja committee has chosen Operation Sindur as the theme for this year's Ganesh Puja. कि ऑपरेशन सिंदूर का बारे में सिंदूर अपना कोई प्रोग्राम नहीं था। सिंदूर हम लोग को ऊपर में तोप दिया गया है, क्योंकि हम लोग का निरीह का ऊपर में आदमी लोग को जो पर्यटक के रूप में कश्मीर में घुमा था, वो बेगुनाह लोग था, उसमें कोई कसूर नहीं था। उन लोग का एक नेगेटिव ये से हम लोग का ऊपर तोप दिया गया है। उस तोप का बदले में मोदी जी ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम दिया है सिंदूर। और जो माँ बहन का हम लोग का जो सिंदूर पूछ कर उन लोग का धर्म पूछ कर जो ये बात किया था, जो आपका मोदी जी को उनका जो आपका शामी औरत लोग है उनको देखा और बोलिए हमारा सिंदूर तो मिट गया है। वो इसके वजह से मोदी जी ने पूरा इंडिया के टीम 140 करोड़ आदमी लोग ने ये सिंदूर नाम देके ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। ये ऑपरेशन पराक्रम है और ऑपरेशन का दिखला दिया है सारा विश्व को। हम लोग का सिंदूर का नाम से कितना ये किया है, ये सारा विश्व भी जान गया है 140 आदमी का पावर कितना है। In Manipur, the Public Health and Engineering Department launched its first ever online billing portal for water tariffs in Imphal Municipal Corporation and Greater Imphal areas. The new portal, available at bills.phd Manipur, was inaugurated at the PHED main office conference hall in Kyothong, Imphal West. The facility allows registered consumers and households with water meters to pay bills online. The portal has been on trial since January 2025, during which over 50,000 meters were installed and more than rupees 91 collected. Officials highlighted that the system offers accurate and transparent billing with access to parts records, multiple digital payment options, instant alerts, and quick grievance redressal. The portal is also expected to reduce manpower requirements for bill preparation and distribution. A new tariff system based on household water consumptions will be introduced shortly. Consumers can also apply for new connections online and use the dedicated helpline number for assistance. Speaking at the launch, PHED Secretary Hong Yo-Worshang said the current focus is on Imphal Municipal Corporation and Greater Imphal areas. He urged residents to approach the Water Supply Maintenance Division offices at Kyothong and Porompat for installation of new water meters. Senior officials including Chief Engineer Shangrai Pao Avashum Wo and Superintending Engineer Tokchom Babina Devi attended the meeting. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has announced that the shoot-at-sight orders at night in Dhubri district will continue during the upcoming Durga Puja festival. The orders, first enforced on June 13 after communal disturbances were introduced to prevent unrest in the sensitive border district. Sarma said the government's priority is to protect people of Sanatan Dharma who are a minority in Dhubri from any fundamentalist threat. He reiterated that anyone attempting to create unrest will face severe consequences. The Chief Minister noted that while there are currently no incidents of violence, the orders remain in place as a precautionary measure during the festival, which will be celebrated from 28th September to 2nd October. Sarma had visited Dhubri on June 13 and again 10 days later, warning against communal disturbances. Since then, more than 150 alleged anti-social elements, including 11 people from outside Assam with pending cases, have been arrested. The unrest in June followed incidents of illegal cattle slaughter during Bakrid, with parts of meat reportedly thrown across locations in Assam.
Tensions escalated after a cow's skull and later a cow's head were found near a temple in Dhubri, sparking stone pelting incidents. Despite appeals for harmony, the government has maintained strict measures to ensure law and order. Durga Puja, apni Dhubrit ji সময়ত উত্তপ্ত আছিল সেই সময়তে গৈছিলে আৰু কিছুদিন আগতে জামায়াতে ইসলামী যে গ্ৰুপ অলপ দেখা গৈছে স্যার ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ থাকিব আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই চলি আছে গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে In Assam, the state government conducted a large-scale eviction drive inside the Rengma Reserve Forest in Golaghat district on 26 August. Officials said nearly 230 families were displaced and several hectares of land were cleared of alleged encroachments. This was the second phase of the eviction exercise, which began on 18 August to remove encroachments from about 26 hectares of forest land. The operation had been temporarily halted earlier when families did not vacate their settlements. And according to an official release, the second phase targeted illegal settlements in number 1 Madhupur Rana Nagar and Hadidupi areas of the Rengma Reserve Forest. During the drive, authorities demolished 80 households in Madhupur, 44 in Rana Nagar and 104 in Hadidupi, along with multiple unauthorized structures spread over several hectares of forest land. The statement said prior notices had been issued to encroachers and the process was carried out in a transparent manner. Senior functionaries including Special Chief Secretary for Forest M.K. Yadava, officials of the Forest Department, Assam Police, CRPF and District Administration monitored the operation. This eviction follows the first phase of the drive carried out on 2nd August in Uriamghat along the Assam-Nagaland border, where around 1,500 families were affected as nearly 9,000 because over 1,200 hectares were cleared. Extensive eviction exercises in both Rengma and Doyang Reserve forests have reclaimed more than 1,400 hectares of protected land. Earlier this month, the government also cleared nearly 133 hectares of alleged encroachments from Nampur South Reserve Forest in Golaghat, displacing more than 350 families. That is all the news for now. Keep on watching Hornbill TV for more updates.